Hello, you're watching the prime time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that India has to set a goal to become a developed nation within the next 25 years. President Draupadi Murmu on Monday conferred Padma Awards to 71 eminent personalities for the year 2025 at the first civil investiture ceremony held at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. India at the United Nations strongly condemned the recent terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, describing it as the worst civilian attack since the 26/11 Mumbai attacks. At least 7 people were killed and more than a dozen others injured after a blast struck a peace committee office in Khyber Pakhtunkhwa's South Waziristan tribal district on Monday, police and health officials have stated. Now the news in detail. President Draupadi Murmu on Monday conferred Padma Awards to 71 eminent personalities for the year 2025 at the first civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. Of them, 4 were conferred with Padma Vibhushan, 10 with Padma Bhushan, and 57 personalities were confirmed with Padma Shri. D. Nageshwar Reddy, Dr. Lakshmi Narayan Subramaniam were confirmed with Padma Vibhushan for their contribution to medicine and art fields, respectively, while M.T. Vasudevan Nair and Osamu Suzuki were honored with Padma Vibhushan posthumously. Among those honored with Padma Bhushan are Nandamuri Balakrishna, Shekhar Kapoor, former Indian hockey team captain, Shrijesh PR, while former Deputy Chief Minister of Bihar, Sushil Kumar Modi, were confirmed posthumously. Those honored with Padma Shri include cricketer Ravi Chandran Ashwin, former SBI Chairman Arundhati Bhattacharya, Stephen Knapp, Ronu Majumdar, and classic vocalist Dr. K. Omankutti Amma. On the occasion, Vice President Jagdeep Dhankar, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers including Amit Shah and other dignitaries were also present. On Tuesday, Padma awardees paid homage at the National War Memorial in Delhi. Dr. Dovur Nageshwar Reddy, Chikitsa, Gastroenterology. Dr. Lakshmi Narayana Subramaniam, Kala Sangeet. Ahmedabad Municipal Corporation demolished illegal settlements near Chandola Lake to remove Bangladeshi intruders on April 29th. Joint Commissioner of Police Sharad Singhal said there was a Siyasat Nagar Bengal Vas where a majority of Bangladeshis used to stay. EMC conducted a survey in which it was found that illegal construction was done. A demolition drive is underway. A total of 50 JCPs are working here and around 2,000 police personnel are deployed here as well, he stated.
ये जैसा कि आप जानते हैं आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की जमीन है, जो सरकारी जमीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। कितना पुलिस बंदोबस्त है, कितना जेसीबी यहाँ पर लगाया गया है? टोटल 50 जेसीबी, अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। ये जो सब रहते थे सब या बांग्लादेशी पकड़े गए यहीं रहते हैं इन लोगों ने? हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगालवास था, वो यहाँ पे ज्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे। Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel on Tuesday chaired an emergency meeting in the wake of the demolition drive of illegal settlements near Chandola Lake by Ahmedabad Municipal Corporation and against illegal Bangladeshis. The AMC launched a special demolition drive against Bangladeshi intruders near Chandola Lake today. According to Ahmedabad Police Commissioner Gyanendra Singh Malik, Bangalwas is a region where many Bangladeshi reside and action has been taken against them in the past as well. He stated that 3 days ago, the police officials conducted a mass operation where more than 180 Bangladeshis were identified and more than 2,000 police personnel were deployed in the region apart from illegal construction that the AMC destroyed. The Ahmedabad Police Commissioner further registered an FIR against Lallu Bihari, who allegedly used to make fake rental agreements and Aadhaar cards. Some individuals have also been found to have obtained illegal passports and the police are investigating the matter. अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया में एक सियासत नगर एरिया है, वहाँ पे एक बंगाली वास जो एरिया कहते हैं, वहाँ काफ़ी इलीगल बांग्लादेशी यहाँ के रहते हैं। पहले भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रही है, पहले भी डिमोलिशन हुए हैं और अभी एक मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन 3 दिन पहले पुलिस ने किया था। उसमें लगभग 180 से ऊपर अभी तक बांग्लादेशी जो इलीगल बांग्लादेशी हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चालू है। उसके अलावा आज ये इलीगल जो यहाँ बांधकाम किया हुआ है जो चंडोला तालाब में, उसका डिमोलिशन की कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ हो रही है और पुलिस ने एडिक्वेट बंदोबस्त यहाँ रखा है। लगभग 2000 के करीब पुलिस फोर्स तैनात है। इसका पर्सनल सुपरविजन जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच मिस्टर शरद सिंगल कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है और 2000 से अधिक पुलिस है। उसके अलावा 20 SRP की कंपनियां भी तैनात की गई हैं। अहमदाबाद की पूरी जो पुलिस है उसको हमने स्टैंड बाई में रखा है। कहीं भी कोई इंसिडेंस अगर ऐसा बनता है तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग कार्रवाई करेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो इसमें बात है कि सभी लोग यहाँ के, चाहे वो हिंदू हो या यहाँ के मुस्लिम हो, सभी चाहते हैं या ईसाई सभी चाहते हैं कि जो इलीगल बांग्लादेशीज हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो बांग्लादेशी जो बाहर से इलीगली आए हैं, घुसपैठ करके आए हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़क स्ट्रांग एक्शन ले रही है। और एक हमने एक FIR भी दाखिल की है जिसमें एक लल्लू बिहारी के एक शख्स और उसके कुछ सागरित हैं जो कि यहाँ पे फोर्ज रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनाना, उनको कैसे आधार मिले, वो सब कार्रवाई वो करता था। उसने बड़ा एक यहाँ पे फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ था, उस 200 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा वो भाड़े ऊपर देता था और उसका भी वो जो रेजिडेंस वगैरह जो उसने बनाया था इलीगली वो भी डिमोलिश कर दिया और बाकी भी डिमोलिशन की कार्रवाई अभी चल रही है। सर, ये जो पकड़े गए बांग्लादेशी हैं इनको डिपोर्ट किया जाएगा? इनको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बांग्लादेशी इलीगली घुस जाता है उसको आप डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है पहले डिटेन करो, फिर काफ़ी एजेंसियां उसको इंटरोगेट करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो कैसे आया, कहाँ से आया, सब प्रोसेस करके फिर हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में ये प्रपोजल जाता है, फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, डिपोर्टेशन की कार्रवाई उस हिसाब से होती है। सर, ये जो अधिकतर लोग Heading on to the next news, the Jammu and Kashmir government has shut dozens of resorts and more than half of the tourist destinations in the Union Territory.
The preventive move came amidst security concerns days after a terror attack at the scenic meadows of Pahalgam, which left 26 civilians dead. At least 48 resorts have been shut in the Union Territory, known for its serene valleys and picturesque mountains. Several tourist sites like Durpatri in Budgam and Varinag in Anantnag have also been made out of bounds to the tourists. This decision comes amidst uncertainty over Kashmir tourism, a major source of income for the locals. Scared after the massacre, tourists have been fleeing the Union Territory, while many travelers have cancelled their upcoming tours. Locals fear that the drop in tourism will have a big impact on their source of income and livelihoods, as the town is yet to come to terms with last week's horror. They have also staged protests condemning the terror attack, asserting their solidarity with the victims. Calling for decisive action against terrorism, Chief Minister Omar Abdullah has said that the people of Kashmir have come out openly against the murder of innocent people, and one must avoid any misplaced action that alienates people. We'll be right after a short break. Every day goes through 136 quality checks, giving you a thick and tasty, perfect cup of tea. No wonder Nestle Every Day is your #1 choice. Welcome back after the break. Let's continue with the news. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said that India has set a goal to become a developed nation within the next 25 years. Addressing the YUGM conclave, Prime Minister Modi said that there is limited time and goals are big. He also said that this was the reason why it is important that the journey of idea from prototype to product is also completed in the shortest possible time. According to the Prime Minister, when the distance from lab to market is reduced, the results of research starts to reach the people faster. This also motivates the research as well. विद्यार्थियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस पे तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसलिए
ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। जब हम लैब से मार्केट तक की दूरी को कम कर देते हैं तो रिसर्च के परिणाम लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। इससे रिसर्च को भी मोटिवेशन मिलता है, उनके काम, उनकी मेहनत का इंसेंटिव उन तक पहुंचता है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और वैल्यू एडिशन के व्हील को और गति मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। The Prime Minister also shared that they are working on the vision to make AI in India and it should continuously promote AI, quantum computing, advanced analytics, space technology, health technology and synthetic biology. India is amongst the countries leading IT development and adoption. So, for its expansion, the government has launched the India AI mission, says the Prime Minister. फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को एक्सपीरियंस पे तब्दील कर सके, इसके लिए हमने 7,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में इंटर्नशिप सेल स्थापित किए हैं। युवाओं में नए स्किल्स विकसित करने के लिए आज हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इन युवाओं के टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ये ताकत ही भारत को सफलता के शिखर तक लेकर जाएगी। साथियों, हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। और इसलिए ये जरूरी है कि हमारे आइडिया की प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक की यात्रा भी कम से कम समय में पूरी हो। जब हम लैब से मार्केट तक की दूरी को कम कर देते हैं तो रिसर्च के परिणाम लोगों तक तेजी से पहुंचने लगते हैं। इससे रिसर्च को भी मोटिवेशन मिलता है, उनके काम, उनकी मेहनत का इंसेंटिव उन तक पहुंचता है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और वैल्यू एडिशन के व्हील को और गति मिलती है। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। India strongly condemned the recent terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, describing it as the worst civilian attack since the 26/11 Mumbai attacks. Delivering India's statement at the launch of the Victims of Terrorism Attacks Network at the United Nations, Deputy Permanent Representative of India, Yojana Patel, said the Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008.
Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families and the society. She emphasized that India, with its history of facing cross-border terrorism, recognizes the profound scars that such acts leave on societies over time. Ambassador Patel also acknowledged the strong and unequivocal support shown by the international community in the aftermath of the Pahalgam attack. She stated that India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by the leaders and governments across the world in the wake of the recent terrorist attack at Pahalgam. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. She noted that the collective condemnation and solidarity reflects a growing global consensus that terrorism must be confronted with determination and unity. Thank you, Chair. I would like to begin by thanking the UN Office of Counterterrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the Group of Friends of Victims of Terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Voronkov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Bhutan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. Thank you. At least 7 people were killed and more than a dozen others injured after a blast struck a peace committee office in Khyber Pakhtunkhwa's South Waziristan tribal district on Monday, police and health officials have stated. The explosion, which targeted a meeting inside the peace committee premises, has once again highlighted the deteriorating security situation in the province, Dawn reported as such. While no group has yet claimed responsibility, tensions in KP have been rising steadily, especially after the proscribed Tehreek-e-Taliban Pakistan withdrew from its ceasefire agreement with the government in November 2022, pledging to escalate attacks on security forces and their affiliates. Monday's attack in South Waziristan adds to a growing list of violent incidents in the region that have put both officials and civilians on high alert. Wana City Police Station House Officer Usman Nazir confirmed to Dawn.com that the explosion occurred around 11 a.m., killing 7 individuals and injuring 16 others, and 5 of whom are in critical condition. Now, Nazir stated that a peace committee office was specifically targeted during an ongoing meeting. He also mentioned that peace committee member Saifur Rahman sustained injuries but was reported to be in stable condition. Meanwhile, the district headquarters hospital in Wana verified the toll, reporting that a total of
9 injured persons had been admitted following the blast. Rohit Basfor, who acted in the upcoming series Family Man 3, was found dead at the Jalupaham waterfalls near Guwahati on Sunday afternoon. RTC Guwahati F&ESS says that they received an information about a drowning incident in Jalupaham waterfall. Rani, so their team immediately reached the spot and started the search and rescue operation with deep divers, and after searching the place, the victim is finally recovered successfully by our team and the victim's body is handed over to Rani. PS. According to sources, the incident occurred around afternoon. Basfo had gone for a picnic with 9 of his colleagues when he reportedly fell into the waterfall. The body has been sent to post-mortem examination and further investigation is underway. Now that is all we have for now. For more news and the latest updates, keep watching Hornbill TV.